नमस्कार, सुप्रभात और स्वागत है आप सभी दर्शकों का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार श्रीहरिकोटा से, जहां से हम आपके लिए इसरो तथा NSIL के एक और महत्वपूर्ण मिशन जिसका नाम है LVM3 M3 OneWeb India-2 से जुड़ी सारी जानकारियां आपसे साझा करेंगे। मैं विकास स्वर्णकार अपने साथी कमेंटेटर मिस माधुरी पी के साथ आप सबका स्वागत करते हैं। आज 26 मार्च 2023 को यह प्रमोशन LVM3 OneWeb India-2 मिशन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के द्वितीय प्रमोशन मंच से भारतीय मानक समय के अनुसार सुबह 9:20 पर किया जाएगा। इससे पहले 23 अक्टूबर को 2022 को LVM3 M2 OneWeb India-1 के सफल मिशन के साथ हमने OneWeb के 36 उपग्रहों को पूर्ण परिशुद्धता से उनके निर्दिष्ट कक्षा में स्थापित किया था और आज हम पुनः LVM3 के द्वितीय वाणिज्यिक प्रमोशन मिशन के लिए तैयार हैं। कुछ अंतिम गतिविधियों के पश्चात लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी LVM3 का प्रमोशन द्वितीय प्रमोशन मंच से किया जाएगा। Namaskar and good morning viewers. Welcome to the live telecast of LVM3 M3 OneWeb India-2 mission. I am Madhuri, bringing to you the commentary in English along with my co-commentator Mr. Vikas Swarnkar, who will be giving the commentary in Hindi. We bring to you the details of launch mission from the Mission Control Center at Satish Dhawan Space Center, SHAR, Sriharikota, ISRO, courtesy Doordarshan. Also, you can watch the live telecast on ISRO website, YouTube, Facebook and Twitter. Now we bring to you the integration video. Now this is the visual of the second vehicle assembly building where the twin S200 boosters are being prepared in their respective assembly towers. Firstly, the nozzle assembly with the nozzle end segment will take place, and then the subsequent middle and head end segments will be assembled. When the two S200 motors are fully assembled, they are transferred on to the mobile launch pedestal. Here you can see the head end segment of P plus motor. That's the igniter of S200 getting assembled. Now you can see the assembly of L110 in its respective facility, and it will be moved. Roger. And these are the visuals from SVAB, where the L110 stage is being tilted and assembled between the booster stages. अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं यह तृतीय तथा अंतिम चरण है LVM3 का, जिसे हम क्रायो अपर स्टेज के नाम से जानते हैं। यह बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंजन होता है, कॉम्प्लेक्स इंजन जो कि क्रायो ईंधन पर आधारित चरण है। यह अभी आप देख रहे हैं EB, जिसे इक्विपमेंट बे कहा जाता है। यह एक तरीके से दिमाग है पूरे लॉन्च व्हीकल का, और यह दृश्य है 36 OneWeb के उपग्रहों का, जिसे ऊष्मा कवच के अंदर परिरक्षित कर दिया गया है। इसे हम एनकैप्सुलेटेड असेंबली कहते हैं और इसे बड़ी सावधानी पूर्वक व्हीकल असेंबली बिल्डिंग लाया जाएगा। अब तक एकीकृत यान जिसमें S200, L110 और क्रायो स्टेज एकीकृत कर दिए गए हैं, उसके ऊपर में उपग्रहों को समायोजित कर इसे लॉन्च पैड लाया जा रहा है। विहंगम दृश्य शार का, इसे बड़ी सावधानी पूर्वक लॉन्च पैड लाया गया।
और आगे के पूरे परीक्षण तथा तरल नोदक का भराव यहाँ से किया जाएगा। On your screens now, the magnificent sight of the LVM3 M3 OneWeb India mission standing at the second launch pad umbilical tower. The launch of LVM3 OneWeb India-2 mission is scheduled to take place today, the 26th of March 2023 at 9 hours 20 seconds Indian Standard Time from the second launch pad. This launch is the second commercial mission of LVM3. Earlier, on 23rd of October 2022, LVM3 M2 had carried 36 satellites of OneWeb. Today's mission intends to place 36 more satellites of OneWeb in 450 kilometers circular orbit with an inclination of 87.4 degrees. The launch is collaborated through NewSpace India Limited, a public sector establishment under Department of Space. The countdown for the mission is 24 hours long and the activities are taking place unhindered. Roger. प्रमोशन के लिए वातावरण पूरी तरह सामान्य है, मौसम खुला हुआ है, दर्शकों के लिए भी जो यहाँ आए हुए हैं उन्हें आंखों देखा अनुभव होगा, बहुत ही रोमांचक अनुभव होने वाला है। यह दर्शक दीर्घा यहाँ उपस्थित आंखों देखा अनुभव लेने के लिए बहुत भारी संख्या में यहाँ दर्शक आए हुए हैं। अपने आप में एक बहुत ही रोमांचक पल होता है एक इसरो के सबसे भारी लॉन्च व्हीकल के लिफ्ट ऑफ को देखना। These are the visuals from the launch view gallery here at Sriharikota. More than 10,000 enthusiastic audience have joined to watch the launch live. Roger. लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। अब हम प्रमोशन से 22 मिनट की दूरी पर हैं। इस प्रमोशन की उल्टी गिनती 24 घंटे पहले प्रारंभ हो चुकी है और सारी गतिविधियां पूर्व निर्धारित रूप से तथा सुनियोजित तरीके से पूर्ण की जा रही हैं। अब हम प्रमोशन से 22 मिनट 19 सेकंड की दूरी पर हैं। इस दौरान यान तथा उपग्रहों को पावर ऑन कर उनकी स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित की जा रही है। तरल नोदक का भराव कर तथा स्थिति प्राप्त कर भराव शुरू किया जा चुका है। अंतिम आवेशन के पश्चात यान पूर्णतः तैयार होगा अपने मिशन को पूरा करने के लिए। सभी वैज्ञानिक, तंत्र विशेषज्ञ, अभियंता अपने तंत्रों के स्वास्थ्य जांच कर और संतुष्ट होने पर तंत्रों की सूचना अपने तंत्र निदेशक को देंगे। Roger. Several teams of ISRO belonging to the range, launch vehicle and tracking have worked together with the customer team of OneWeb for getting the resources ready for the launch. We are about 21 minutes away from the launch. Noted. इसमें और काउंटडाउन के समय कई प्रमुख तंत्रों के स्वास्थ्य जांच हो रही है। इसमें बैटरी का आवेशन, ट्रैकिंग स्टेशन से संचार जांच, मिशन कंप्यूटर, वास्तविक समय तंत्र, एकॉस्टिक सप्रेशन सिस्टम, जायरो पैकेजेस आदि की जांच संतोषजनक तरीके से पूर्ण की जा रही हैं। कुछ अंतिम जांच के पश्चात ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू किया जाएगा। All real-time systems are ready for the launch of LVM3 M3 OneWeb India-2 mission. ROD Roger. RSO to ROD. Range safety systems are ready for the launch of LVM3 M3 OneWeb India-2 mission. ROD Roger. CNC to DTC Director. All stack network stations confirm readiness to support real-time launch of LVM3 OneWeb India-2 mission. DTC Director Roger. Call Gen-1, you can start storage.
minus 20 minutes. Request all stations change over to channel 2. Has started data storage. Even number 453, 454, 461, 466 completed. The launch vehicle is ready with all its systems being in the final level of readiness. All the propellants have been serviced. Batteries have been charged. Even number 452 completed. Please change over to channel 2. This is Vehicle Director. Based on the vehicle system performance, vehicle is ready for the launch of LVM3 M3 OneWeb India-2 mission. Mission Director Roger. Satellite Director calling Mission Director. All satellite systems are ready for launch. Mission Director Roger. ROD to Mission Director. Range is ready for LVM3 M3 OneWeb India-2 launch. Minus 19 minutes. Mission Director Roger. TTC Director to Mission Director. TTC Director confirms readiness of all participating TTC stations and network for supporting LVM3 M3 OneWeb India-2 mission. Mission Director Roger. Mission Director hereby authorized the launch of LVM3 M3 OneWeb India-2 mission based on the clearances of MRR and Launch Authorization Board, based on the confirmation of readiness of vehicle systems, spacecraft, range and TTC network systems by respective mission executives and prevailing favorable weather conditions. Mission Director hereby authorized for the launch operation sequence of LVM3 M3 OneWeb India-2 mission for the launch today, that is 26th March 2023 at 9 hours 20 seconds Indian Standard Time. All stations to note. Mission Director has given authorization for launch. The Launch Authorization Board had reviewed the readiness of all the technical systems and amenability of whether to give the go-ahead for the commencement of countdown. You have just watched on your TV screens Pre-launch operations on C25 stage. Shri S. Mohana Kumar, Mission Director LVM3 M3, giving clearance for the initiation of launch automatic launch sequence, based on which the initiation has been commenced. अभी अभी आपने देखा कि इस ट्रैक निदेशक, उपग्रह निदेशक, यान निदेशक तथा रेंज निदेशक, टेलीमेट्रिक ट्रैकिंग एंड कमांड निदेशक ने अपने तंत्रों की स्वास्थ्य जांच की जानकारी मिशन निदेशक को दे दी है और उसके बाद मिशन निदेशक ने लॉन्च की अनुमति प्रदान की। तत्पश्चात यान निदेशक ने ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू कर दिया है। इसके बाद यान स्वचालित हो जाता है और पूरा नियंत्रण ऑन बोर्ड कंप्यूटर के पास चला जाता है। Timed concert of critical activities have been carried out in the past 24 hours of countdown. 14.5 minutes ahead of the launch, automatic launch sequence is initiated, SHAR 1 and 2 station. which is a capsule of the most essential confirmations regarding the launch vehicle and the spacecraft systems. All stations to note hydrogen tank PLO started and the boil off commenced. Minus 16 minutes. This is Vehicle Director. Vehicle Director authorizes ALSC to proceed with the automatic launch sequence for the launch of LVM3 M3 OneWeb India-2 mission. LSC Roger. SDS servers activated. MC confirmed reception of SHAR 1 and SHAR 2 data. अब ऑन बोर्ड कंप्यूटर ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस के अंतर्गत है। इस दौरान वह आंतरिक जांच कर खुद ही स्वास्थ्य जांच करेगा प्रमोचन यान की तथा सब कुछ संतोषजनक होने पर प्रज्वलन का कमांड देगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर पूरी व्यवस्था
बनाई गई है विजिटर्स गैलरी के लिए, जहां पर -15 ऑनलाइन minutes. रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ दर्शक आकर आंखों देखा अनुभव ले सकते हैं। अब हम प्रमोशन से 14 मिनट 47 सेकंड की दूरी पर हैं। 70 bar fiber to cryom linkages given. We are 14 minutes away from the launch. इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है OneWeb द्वारा निर्मित 36 उपग्रहों को 450 किलोमीटर की निम्न भू वृत्ताकार कक्षा में 87.4 डिग्री के झुकाव के साथ स्थापित करना। अब -14 तक minutes. OneWeb के कुल 588 उपग्रह उनकी निर्धारित कक्षा में स्थापित किए जा चुके हैं। इस मिशन के पश्चात अंतिम 36 उपग्रहों के साथ OneWeb के उपग्रहों का प्रथम पीढ़ी के नक्षत्र पूर्णतः सक्षम होंगे पृथ्वी के दूरस्थ इलाकों में इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए। अब दर्शकों के लिए प्रस्तुत है एक कर्टेन रेजर वीडियो। LVM3 is ISRO's heaviest launcher, standing high at the SDSC-SHAR. It is all set to launch the second batch of 36 commercial satellites of OneWeb. The first batch of 36 satellites was launched in October 2022 by LVM3 M2 launch vehicle. The OneWeb Gen-1 is a 150 kilogram satellite, and the constellation comprises of 648 individual satellites, 588 active satellites equally divided among 12 planes, operate at an altitude of about 1,200 kilometers. -12 minutes. The vehicle will place the satellites in a low Earth orbit. With this launch, OneWeb will complete the first generation of OneWeb constellation and shall initiate the global coverage in 2023. It will bring high-speed, low-latency secured solutions to enterprises, along with towns, villages, municipalities and schools, including the hardest-to-reach areas across the country. OneWeb has collaborated with NewSpace India Limited, NSIL, the commercial arm of Indian Space Research Organization, for this launch. NSIL has arranged with OneWeb to launch 72 satellites in 2 phases. LVM3 has established itself as a reliable and robust launch vehicle of ISRO. This is for the second time that LVM3 will launch multiple satellites into low Earth orbit. It has the heaviest payload mass till date. With this launch, the LVM3 shall substantiate its position in the international commercial launch services market and reach newer heights. We are about 10.5 minutes away from the launch, and as we await the launch of LVM3 M3 OneWeb India-2 mission, let me briefly explain the mission's flight events. The gigantic twin S200 strap-on boosters
will simultaneously fire at T0 or the exact time of liftoff, providing the -10 thrust for minutes. liftoff, and they continue till 138 seconds. The core L110 liquid stage, powered by hypergolic liquid propellant, ignites 111 seconds into the flight when the rocket is at an altitude of 43 kilometers and having acquired a relative velocity of 1.2 kilometers per second. The S-200 strap-on boosters are jettisoned 138 seconds into the flight. The next two flight events happen at quick succession when the rocket would have negotiated the dense atmosphere. They are the separation of payload fairing, as the aerodynamic shape of the rocket is no longer important, and the other event is the initiation of closed-loop guidance. The L110 core stage that would have provided thrust to negotiate the trajectory for close to 200 seconds completes its burn and -9 separates minutes. at 308 seconds into the flight, while the rocket would have acquired 244 kilometers altitude. The cryogenic upper stage C25 is ignited 2 seconds later and burns for 632 seconds, adding 204 kilometers to the altitude and a remarkable 4.3 kilometers per second to the relative velocity. After the cryo stage is shut off at 942 seconds into the flight, there's no significant change in the altitude, but the 36 passenger satellites of OneWeb India-2 and 9 batches of 4 numbers each, while the cryo stage reorients and adds velocity for subsequent batches of satellites. There's going to be a gap of 30 and 800 seconds alternately for each batch of OneWeb satellite separation. The separation mechanism for the satellites is part of the satellite dispenser. अब हम प्रमोशन से 7 मिनट 46 सेकंड की दूरी पर इस प्रमोशन का घटनाक्रम कुछ इस प्रकार होगा। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, यह यान त्रिचरणीय यान है। इन चरणों को क्रमानुसार प्रज्वलित कर यथा समय पृथक कर निश्चित कक्षा प्राप्त की जाएगी। इस मिशन का पूरा कार्यकाल 75 मिनट का होगा। यह सबसे ज़्यादा समय वाला प्रमोशन मिशन है। सर्वप्रथम T0 पर S-200 बूस्टर्स, दोनों S-200 बूस्टर को प्रज्वलित किया जाएगा। इनका प्रज्वलन काल 120 सेकंड का होगा। तत्पश्चात L110 चरण का प्रज्वलन किया जाएगा T+111 सेकंड्स पर। इसके लगभग 10 सेकंड के पश्चात L110 और दोनों S-200 बूस्टर प्रज्वलित रहेंगे। तत्पश्चात S-200 बूस्टर्स को यान से पृथक कर दिया जाएगा। अब यान लगभग प्रमोशन से 187 सेकंड पर आकर जब 115 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका होगा, तब वह घने वातावरण से बाहर जा चुका होगा और तब पेलोड फेयरिंग को यान से पृथक कर दिया जाएगा। इसके बाद T+308 सेकंड्स पर L110 चरण को, जो कि दूसरा चरण है यान का, उसे यान से पृथक कर दिया जाएगा। -6 मिनट्स। L110 के पृथक होने के तुरंत बाद C25 यानी क्रायो अपर स्टेज का प्रज्वलन होगा और यह T+942 सेकंड्स यानी करीब 640 सेकंड तक जलकर शांत हो जाएगा। इस दौरान यान अपने प्रथम अंतःक्षेपण की स्थितियां प्राप्त कर चुका होगा। इस यान में 36 उपग्रह अपनी कक्षा के लिए सफर कर रहे हैं और उन्हें क्रमबद्ध तरीके से 9 बार में उनकी निर्दिष्ट कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इस दौरान क्रायो स्टेज को पुनः दिशा तथा अभिवृत्ति में बदलाव कर निर्धारित कक्षाओं में उपग्रहों को प्रमोचित किया जाएगा। चूंकि यह प्रमोशन मिशन
बहुत लंबा है। इस दौरान यान हमारे ट्रैकिंग रेंज से बाहर चला जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद वह पृथ्वी के चक्कर लगाकर हमारी ट्रैकिंग रेंज पर पुनः उपस्थित होगा और तब हम सभी उपग्रहों के अंतःक्षेपण की पुष्टि करेंगे। अब हम प्रमोशन से 4 मिनट 35 सेकंड की दूरी पर हैं। पूरे तंत्र सामान्य स्वास्थ्य जांच में सामान्य है। The sheer size and the enormous thrust to be generated at the liftoff necessitates some special systems for the GSLV launch pad when it takes off. One such system being acoustic suppression system. Minus 4 minutes. At the time of liftoff, the twin S200 boosters generate enormous acoustic and then which have a potential to damage the electronics in launch vehicle. As a part of acoustic suppression system, huge quantities of water is injected onto the launch pedestal to provide denser medium of water droplets to attenuate the liftoff acoustics. Onboard computer in flight mode. Minus 3 minutes. इस प्रमोशन मिशन के पश्चात 36 उपग्रहों के साथ OneWeb के उपग्रहों के प्रथम नक्षत्र पूर्णतः तैयार हो जाएगा और पृथ्वी के दूरस्थ इलाकों पर इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होगा। इस प्रमोशन में भी पहले की तरह 9 चरण हैं, जिसमें 36 उपग्रहों को उनकी कक्षा में स्थापित किया जाना है। एक चरण में 4 उपग्रह प्रमोचित किए जाएंगे, क्रमशः 8 चरणों में तथा 75 मिनट में यह पूरा मिशन पूरा किया जाएगा। इसमें उपग्रहों का कुल भार 5804 केजी है। हर एक उपग्रह करीब 150 केजी का भार है। अब हम प्रमोशन से 2 मिनट की दूरी पर। Visuals from the launch complex, the launch pad on your screens now. कुछ अंतिम गतिविधियां जारी हैं, जिसके पश्चात 1 मिनट 24 सेकंड पर दोनों S200 सॉलिड बूस्टर्स को प्रज्वलित किया जाएगा। यह LVM की 6वीं उड़ान होगी। इससे पहले 5 उड़ानें सफलतापूर्ण पूरी की गई हैं। Minus 1 minute. Excitement and seriousness simultaneously building up. All subs armed. Minus 50 seconds. Cryostat is ready. Model ready. All sequences are Minus 45 seconds. Minus 40 seconds. L110 VHPP open. Minus 30 seconds. Seconds to go. Real-time programs activated. Minus 25 seconds. L110 VSPP open. Minus 20 seconds. Minus 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff, 640 tons of powerhouse searing through the sky. A magnificent sight indeed. जी हाँ, सफलतापूर्ण उत्थापन LVM3 M3 प्रमोचन यान का आकाश में गर्जना करता हुआ यह सबसे भारी रॉकेट है इसरो का। First stage performance normal. Here from the mission control center we can feel the vibrations of the launch. दोनों S-200 बूस्टर्स सामान्य निष्पादन करते हुए और यान अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर। Generating a peak thrust of 5,952 kilonewtons in vacuum. S-200 motors thrusting currently. 1 minute. S-200 मोटर जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, इसका एक मोटर का प्रणोदक करीब 200 टन का होता है। इस दौरान यह कुल 12,000 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर इस यान को लिफ्ट ऑफ प्रदान करता है और यह करीब 136 सेकंड्स तक चलकर यान से पृथक कर दिया जाएगा। The trajectory during the atmospheric regime is to have least angle of attack with respect to wind so that the launch vehicle structures experience lesser loads. The S-200s are 26 meters long and 3.2 meters in diameter, carrying 202.6 tons of propellant. अब कोर चरण L110 चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। The core L110 and the two S-200 boosters all thrusting currently. अब कुछ ही सेकंड्स में हम देखेंगे S-200 का पृथक्करण। 200 stages are separated. जी हाँ, S-200 बूस्टर्स को सेपरेट कर दिया गया है तथा L110 या चरण प्रज्वलित है और यान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जा रहा है। On your TV screens, the visuals from the onboard camera showing the separation event of the S-200 boosters. The L110 core stage alone currently thrusting. S-200 बूस्टर्स को जेटिसनिंग मोटर का प्रयोग कर बड़ी सावधानी से यान से अलग कर दिया जाता है। L110 जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है वर्तमान में प्रज्वलित है। Payload fairing separated. Slope guidance initiated. SHAR, Bengaluru and Trivandrum ground stations are currently tracking and the two major flight events have been completed. The separation of payload fairing and the initiation of closed loop guidance. यान की ऊंचाई 142 किलोमीटर। अब यह वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है। यान पूरी तरह सामान्य निष्पादन करता हुआ अब यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है, यानी सेंसर्स की मदद से वह स्वयं का दिशा निर्धारण कर रहा है। Current altitude 163 kilometers. Plus 4 minutes. The L110 stage is powered by twin Vikas engines. The total burn time is close to 200 seconds. यान पूर्णतः अपेक्षित पथ को अनुकरण करता हुआ जा रहा है। Stage is authorized.
कुछ ही सेकंड्स में हम देखेंगे L110 चरण का प्रज्वलन समाप्त हो जाएगा और तत्पश्चात L110 को यान से पृथक कर दिया जाएगा। L110 stage thrust cut off and separated. C25 ignition commanded. C25 ignition confirmed. Several pieces of good news for the flight events. L110 has completed its operation nominally and separated from the ongoing launch vehicle. The C25 cryogenic engine has started its operation. L110 चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है और अंतिम चरण जो कि C25 क्रायोजेनिक इंजन है उसका सफलतापूर्वक प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में वह प्रणोद उत्पन्न कर यान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जा रहा है। +6 minutes. इसका प्रज्वलन काल करीब 640 सेकंड का होगा। तत्पश्चात कक्षा की स्थितियां प्राप्त कर ली जाएंगी और अंतःक्षेपण किया जाएगा। 28.55 tons of propellant loading of liquid hydrogen and liquid oxygen. तृतीय तथा अंतिम चरण LVM3 का क्रायोजेनिक ईंधन LH2 तथा लिक्विड ऑक्सीजन पर आधारित है। यह चरण बहुत ही जटिल C20 इंजन से बना होता है। इसमें लगभग 25 टन का क्रायोजेनिक ईंधन होता है। इस चरण का प्रज्वलन L110 चरण के बंद होने के तुरंत बाद किया गया है। यह चरण कुल 200 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जा रहा है। The advantage of having cryo stage as upper stage is the high specific impulse of the propellant combination. Cryo stage performance normal. Having high specific impulse roughly means a lesser quantity of fuel being able to impart higher delta V or the velocity addition to the ongoing stage. +8 minutes. हर एक चरण के तंत्र विशेषज्ञ पूरी तरह रोमांचित रहते हैं जब उनका तंत्र पूर्ण निष्पादन कर यान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं यान अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है। SHAR, Trivandrum and Bengaluru ground stations tracking in the meantime. The tracking of the LVM3 OneWeb India-2 mission is carried out through a network of ground stations of ISRO Telemetry Tracking and Command Network, ISTRAC, along the flight path. The trajectory and separation events are ascertained through the ground stations. For this mission, Sriharikota, Bengaluru, Trivandrum, Antarctica, Savalbird and Lucknow ground stations are participating. +9 minutes. To cater to the visibility between the Trivandrum and Antarctica ground station limits, a shipborne terminal is deployed to importantly view the cryostage operational regime and the separation of first and second batch of performance satellites. normal. For this particular mission, for about 43 minutes after the injection of the fourth batch of satellites, the rocket goes out of the coverage of ground tracking stations. In the meantime, the data of the inertial navigation system is stored on board, and when the next ground station, Savalbird, is starting to acquire the data, the confirmation of separation events and exact time and injection parameters of the separation events are telemetered.
OneWeb समूह का यह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ वाणिज्यिक समझौते के 10 minutes. अंतर्गत यह दूसरा प्रमोशन मिशन है। इस समझौते के तहत 72 उपग्रहों को निम्न भू कक्षा में स्थापित किया जाना है, जिसमें से 36 उपग्रह LVM3 M2 OneWeb India-1 मिशन के साथ उद्दिष्ट कक्षा में स्थापित किए जा चुके हैं और आज OneWeb India-2 मिशन में अगले 36 उपग्रहों को प्रमोचित किया जा रहा है। यह OneWeb कंपनी के लिए 18वां प्रमोशन है। इससे पहले कुल 588 उपग्रह अन्य प्रमोशन यान से पहले ही भेजे जा चुके हैं। इस मिशन की सफलता के पश्चात OneWeb कंपनी प्रथम निम्न भू कक्षा वाले उपग्रहों के नक्षत्र का निर्माण पूरा हो जाएगा और इसके साथ ही OneWeb उच्च गति कम विलंब वाली वैश्विक संचार सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होगा। इसमें विश्व स्तर पर समुदाय, उद्यम, सरकारों को जोड़ने का यह सर्वप्रथम प्रदर्शन कर पाएंगे। न सिर्फ उद्यम बल्कि छोटे कस्बे, गांव, म्यूनिसिपैलिटी तथा स्कूल जैसी सुविधाएं जो कि दुर्गम से दुर्गम स्थानों पर हैं, उन्हें जोड़ा जा सकेगा। यह मिशन न सिर्फ OneWeb के लिए बल्कि भारत के लिए भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। As we were mentioning earlier, the present mission is the second mission of OneWeb with ISRO in collaboration with NewSpace India Limited. The previous mission with LVM3 M2 was the 14th mission for OneWeb and first with ISRO. The 36 satellites had then been placed in 601 km circular orbit, while for the present Plus mission, 12 minutes. the intended orbit is 450 km circular. Correspondingly, the relative velocity requirement at the time of injection is higher compared to the previous mission. The present mission LVM3 M3 OneWeb India-2 is the 18th launch mission for OneWeb. वर्तमान में तृतीय क्रायो स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल और अंतिम चरण प्रज्वलित है और सामान्य प्रदर्शन कर रहा है। अब हम उड़ान से 760 सेकंड आगे आ चुके हैं। वर्तमान में यान की ऊंचाई 465 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 5.7 किलोमीटर प्रति सेकंड है। Plus 13 minutes. OneWeb is a global communications network powered from space, enabling connectivity for governments, businesses, and communities. OneWeb Gen-1 satellite constellation comprises of 648 individual satellites which are placed in low Earth orbit. India's Bharti Enterprises serves as a major investor and shareholder in OneWeb. As we told, this is OneWeb's 18th launch, its third this year. यान पूरी तरह अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ और यह दर्शाता है कि इसरो किस गुणवत्ता से, किस विश्वसनीयता से यह तंत्र का विकास कर इनका निर्माण किया जाता है और इनका निष्पादन पूरी तरह अपेक्षित। क्रायो स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल तृतीय चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर जा रहा है। For the present mission, the total burn time of C-25 is 632 seconds.
Plus 15 minutes. We are 15 minutes past the launch time. Cryogenic upper stage currently thrusting. तृतीय चरण C-25 सामान्य निष्पादन करता हुआ आगे बढ़ रहा है। यह इंजन इतना जटिल है और भारत इसमें पूर्ण स्वायत्ता प्राप्त कर चुका है। अभी पुष्टि हुई, C-25 इंजन को शट ऑफ कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। The C-25 stage thrust has been cut off, and now we are awaiting the correct injection parameters for the separation of the first and second batch of satellites. Plus 16 minutes. प्रथम चरण के 4 उपग्रहों की कक्षीय स्थितियां कुछ इस प्रकार होंगी। इसकी ऊंचाई 455.5 किलोमीटर के करीब और सापेक्ष गति 7.63 किलोमीटर प्रति सेकंड की होगी। Today's launch will bring the total number of satellites in the constellation to 618. A major milestone will be achieved with the number of satellites now in orbit, enabling the global service. OneWeb will become the first LEO operator to reach this milestone of being ready to roll out its global coverage. वर्तमान में तृतीय चरण injection conditions are achieved. अपनी उचित अभिवृत्ति प्राप्त करता हुआ और कक्षीय स्थितियां प्राप्त कर रहा है। कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे प्रथम समूह के 4 उपग्रहों का प्रमोचन। Cryo stage orienting itself for the separation event of the first batch of satellites, namely 1K, 3K, 5K and 7K. 30 seconds from then, the second batch of satellites, namely 2A, 4A, 6A and 8A will be separated. Plus 18 minutes. न सिर्फ इसरो के बल्कि OneWeb कंपनी के सभी लोग बड़ी उत्सुकता से उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब उनके उपग्रह सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर दिए जाएंगे। Each satellite weighs 150 kgs and the cumulative payload mass for this mission is 5,805 kgs, including the satellite dispenser. Plus 19 minutes. कक्षीय स्थितियां प्राप्त हो चुके हैं। अब कुछ ही क्षणों में प्रथम 4 उपग्रह 1K, 3K, 5K और 7K का प्रक्षेपण होगा। One K, 3K, 5K, 7K satellites are separated. और यहाँ हर्ष का पल सबके सामने प्रथम 4 उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है। अगले 30 सेकंड में अगले 4 उपग्रह 2A, 4A, 6A और 8 का अंतक्षेपण किया जाएगा।
Here, the Plus LVM3 20 minutes. M3 OneWeb India-2 mission has injected its first batch. 2A, 4A, 6A, 8A satellites are separated. Visuals from the onboard camera confirming the separation event of the second batch of satellites 2A, 4A, 6A and 8A. जी हाँ, सफलतापूर्वक द्वितीय समूह के 4 उपग्रहों को अंतक्षेपित कर दिया गया है, 2A, 4A, 6A और 8A। यह सभी के लिए बहुत ही हर्ष का पल, यह मिशन अपनी सफलता की ओर। Current altitude is 457 kilometers. These satellites will eventually be maneuvered into the altitude of about 1200 kilometers. Plus 21 minutes. 12 orbital planes cumulatively contain 588 satellites that are active. Each orbital plane has a separation of 4 kilometers in altitude to avoid collision of satellites. ऑन बोर्ड कैमरा का यह विहंगम दृश्य जिसमें हम देख रहे हैं सैटेलाइट अपनी यात्रा शुरू कर चुका है। अभी मिशन जारी है। अगले कुछ क्षणों में हम देखेंगे अन्य 4 उपग्रहों का प्रमोशन। इस दौरान तृतीय चरण पुनः कक्षा की स्थितियां प्राप्त करने के लिए उचित अभिवृत्ति प्राप्त करेंगे। अगले समूह के 4 उपग्रहों को प्रमोशन के लिए अब से करीबन 800 सेकंड की देरी लगेगी। The separation events are timed apart as 30 seconds and 800 seconds between alternate batches. The first and second batch of satellites have been separated. Now we are waiting the third batch of satellites. But in the meantime, the cryogenic upper stage will reorient itself and add velocity to get ready for the next separation. The first and second batch of satellites have been injected into 455 and 56 kilometers of altitude with a relative velocity of 7.628 kilometers per second. For the next batch of satellites, the stage will go to an orbit of 469 kilometers altitude, while the relative velocity will be 7.611 kilometers per second. इस मिशन में सभी 36 उपग्रहों को 5 चरणों में उनके उद्दिष्ट कक्षाओं में स्थापित किया जाएगा। क्रायो स्टेज के बंद होने के पश्चात प्रथम चरण प्रारंभ हो चुका है। इसमें लिक्विड एपोजी मोटर्स की मदद से उचित अभिवृत्ति नियंत्रण किया गया और यान कक्षा प्राप्त करते ही अंतःक्षेपण की स्थितियां प्राप्त होते ही उपग्रह को प्रमोचित किया गया। अभियान द्वितीय चरण की ओर चल पड़ा है। इस कक्षांतरण में लगभग 13 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त की जानी है और सापेक्ष गति 7.62 किलोमीटर प्रति सेकंड की प्राप्त करनी है। फिर पुनः उचित अभिवृत्ति प्राप्त कर यान अन्य 4 उपग्रह के समूह का अंतःक्षेपण करेगा।
इसके पश्चात तृतीय चरण का अंतक्षेपण प्रारंभ होगा, जिसमें 1A, 3A, 5A और 7A नामक उपग्रहों को उनकी उद्दिष्ट कक्षा में 469 किलोमीटर तथा 7.611 किलोमीटर प्रति सेकंड के सापेक्ष गति के साथ अंतक्षेपित किया जाएगा। इस घटना के 30 सेकंड के पश्चात अगले 4 उपग्रहों को, जो हैं 2B, 4B, 6B और 8B, इन उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाएगा। इन उपग्रहों के प्रमोचन तक हम 16 उपग्रह अपनी कक्षाओं पर स्थापित कर चुके होंगे। अब यान हमारे ट्रैकिंग रेंज से बाहर चला जाएगा, लेकिन पूर्व निर्धारित प्रोग्राम के अनुसार यान अगले चरणों को, जो कि बाकी के 20 उपग्रह हैं, उन्हें प्रक्षेपित करता रहेगा और पृथ्वी के चक्कर लगाकर जैसे ही वह स्वालबर्ड स्थित भू स्टेशन से संपर्क बनाएगा, वह हमें पुष्टि करेगा बाकी के 20 उपग्रह के प्रमोचन की। We are 26.5 minutes away from past the launch time. The total mission duration of LVM3 M3 OneWeb India-2 mission is 75 minutes. तृतीय चरण अपनी अगली कक्षा के लिए अग्रसर है, जो कि 469.8 किलोमीटर की ऊंचाई तथा 7.611 किलोमीटर प्रति सेकंड की सापेक्ष गति होगी। वर्तमान में यान की ऊंचाई 465 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.61 किलोमीटर प्रति सेकंड है। Speaking about the OneWeb satellites, the payload of the satellite is a bent pipe system operating in Ku and Ka band. The forward link receives Ka band signals from the gateway via the satellite Ka antenna. The return link receives Ku band signals from the user terminals via the satellite Ku antenna. The next batch of satellites to be separated are 1A, 3A, 5A and 7A. Thereafter, the fourth batch, namely 2B, 4B, 6B and 8B will be separated. यान पूर्व निर्धारित तरीके से प्रदर्शन करता हुआ अपने मिशन को पूरा करने की ओर अग्रसर है। अब तक हम LVM3 की 5 सफल प्रमोचन देख चुके हैं। वर्तमान में यह LVM3 का 6वां प्रमोचन है। ज्ञात हो कि LVM3 M1 मिशन के साथ हमने प्रसिद्ध चंद्रयान 2 मिशन का प्रमोचन इसी यान से किया था। फिर LVM3 M2 में हमने देखा कि OneWeb के प्रथम 36 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया था और वर्तमान में M3, जो कि अगले 36 उपग्रहों को उनकी निर्दिष्ट कक्षा में स्थापित करने के लिए अग्रसर है। LVM3 इसरो का सबसे भारी और सबसे उन्नत प्रमोचन यान है, जिसने अपनी विश्वसनीयता और दृढ़ता सिद्ध की है और आगे भी कर रहे हैं। इस वर्ष का यह द्वितीय मिशन है इसरो के लिए। इससे पहले SSLV-D2 EOS-7 का सफल मिशन हमने 10 फरवरी 2023 को देखा था।
We are 30 minutes past the launch time and currently the Antarctica ground station is tracking. And cryo stage is reorienting itself for the third batch of separation event. A few seconds later, after confirming the next two batch of satellite separation, the rocket goes out of the visibility range of the ground stations. And after a gap of 43 minutes, the data will be acquired by the Savalbirds ground station. चूंकि यह मिशन पूर्ण दक्षिणी मिशन है, इसमें शार स्थित ट्रैकिंग स्टेशंस, इसके अलावा बेंगलोर, त्रिवेंद्रम और ख़ास तौर पर तैनात किए शिपबोर्न ट्रैकिंग, अंटार्कटिका स्थित भू स्टेशन, स्वालबर्ड स्थित तथा लखनऊ स्थित भू स्टेशन हमें इस यान की पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे। वर्तमान में अंटार्कटिका स्थित भू स्टेशन हमें यान के आंकड़े प्रदान कर रहा है। "20 satellites of this mission will be separated in the non-visibility region, whose confirmation will be available much later." अभियान उचित अभिवृत्ति प्राप्त करता हुआ अंतक्षेपण की स्थितियां प्राप्त कर रहा है। OneWeb के प्रथम पीढ़ी के उपग्रह नक्षत्र 150 केजी वाले उपग्रह के समूह हैं। अब तक 588 उपग्रह भेजे जा चुके हैं। इस प्रमोचन के पश्चात यह संख्या 618 पहुंच जाएगी। इन सभी उपग्रहों को 12 समतल प्लेन्स में बांटा गया है और यह 1200 किलोमीटर की ऊंचाई से सेवाएं प्रदान करेंगे। हर एक प्लेन में आपस में 4 किलोमीटर की दूरी बनाई गई है ताकि इससे टकराव की संभावना खत्म की जा सके। तृतीय और अंतिम चरण यान का उचित अभिवृत्ति प्राप्त कर चुका है। कक्षीय स्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं। अब कुछ ही क्षणों में अगले समूह के 4 उपग्रह 1A, 3A, 5A तथा 7A का अंतक्षेपण उनकी निर्दिष्ट कक्षा में किया जाएगा। 1A, 3A, 5A, 7A satellites are separated. And we have the confirmation of the separation of satellites 1A, 3A, 5A and 7A. This completes the third batch of separation. जी हाँ, तृतीय समूह के उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है। अगले कुछ सेकंड्स में अगले 4 उपग्रह 2B, 4B, 6B तथा 8B 6B, 8B satellites are separated. Now we have the confirmation of the fourth batch of satellites. This is Range Operation Director. 16 satellites are separated till now. Mission is continuing. Remaining 20 satellites will separate as per timeline in the non-visibility period. These 20 satellite separation will be confirmed after Svalbard telemetry station acquisition. During the non-visibility period, ground trace will be updated by extrapolation on the video wall. All stations involved in operation shall continue in positions. Others shall reassemble at 10 hours IST. Over to Mission Director. सोलह उपग्रह प्रमोचित किए जा चुके हैं। अभी भी मिशन जारी है। अगले 20 उपग्रह प्रमोचित किए जाने हैं।
कुछ समय पर इसकी पुष्टि की जाएगी। So far, 16 satellites have been injected into the orbit, 20 more to go. Now let's join for the address by Secretary TOS Chairman ISRO, Sri S. Somnath. Radhakrishnan. Mohan. Congratulations to NSIL and ISRO and OneWeb for the successful launch of LVM3 M3 OneWeb India-2 mission. As we know today, the first 16 satellites of the series are already placed in the right orbit, and now it has gone in the far south of the Earth, and we will be getting confirmation of the remaining spacecraft separation soon once the onboard storage data is acquired by our Indian ground stations. Till now, based on the observations, the vehicle has done extremely well. It went up to the right orbit and placed spacecraft at the right orbit, and also with very minimal disturbances to it. So I am very happy today for the consecutive launch success of LVM3, that is LVM3. And I want to specifically thank NSIL for bringing this opportunity to us, and also for the confidence that OneWeb India team has on ISRO for building this rocket for them for this commercial launch. I also want to thank ISRO for the wonderful work that they have done to make this rocket very reliable and rugged, once again demonstrating the capability of the rocket for placing large, heavy payloads into the right orbit without any glitch. And we look forward for greater engagement with our commercial partners for making this rocket one of the best in this class. So specifically, I want to thank the entire ISRO family, the LVM3 project team for making this historic event happen today. So let me also introduce the Chairman and Managing Director of NSIL, Sri Radhakrishnan, and also the Mission Director of the LVM3, this mission, Mr. Mohan Kumar. So over to Radhakrishnan. Good morning, and I'll share the views of Chairman ISRO, Secretary Department of Space, in congratulating the entire team ISRO for giving us this wonderful, wonderful mission, what we have seen. As you all know, I think having a repeat performance of any particular launcher it's not an easy thing to do. And what we had demonstrated today using the LVM3 for the commercial customer, it is extremely momentous day for us. The kind of maneuvers, one special thing what we see in this particular mission is the cryogenic stage being used for doing such a complex maneuver to meet the requirements of OneWeb in deploying 36 satellites. This is extremely challenging stuff that has been done and repeated here once again in the second mission. Now, on behalf of NewSpace India Limited and ISRO, we would like to compliment our esteemed customer who had given a lot of faith and belief in us and believing in our capabilities. And I would say we are doubly happy that we are part of such a big journey the OneWeb has gone through in the last 3 years. By deploying these particular satellites, I know your services are going to go global. And we are delighted that we are a small contribution to your such a long journey that you have done over several years. I would like to take this opportunity to reassure OneWeb and the entire team here that NSIL would be happy to engage in any future endeavors that would like, in addition to the launch solution that we will continue to provide to your team. Thank you very much, and thank you entire ISRO team for this member. Thank you, sir. Respected Chairman ISRO, Secretary Department of Space, dignitaries, viewers, very good morning to you all. Once again, the launch vehicle LVM3 has shown its might and
ruggedness in taking heaviest payload from our soil to the precise orbit which is required by the satellite. The orbital parameters are achieved and the 36 satellites are being deployed in a sequential manner in 9 steps of 4 numbers each, and 16 satellites are already now. We have got the data. Now once the vehicle is coming to the visibility range, remaining satellites separations also will be reported. I take this opportunity to thank the entire team ISRO, especially from the launch vehicle centers, the VSSC, LPSC, IPRC, ISTRAC and SDSC-SHAR for the wonderful successful mission, and all the deliverables from all the SDAs have performed perfectly well and its intended functions were happened. And this time we have done the assembly of the vehicle in the newly built second vehicle assembly building, wherein from the nozzle trial actuation through the S200 stacking to the entire vehicle integration was carried out under one roof with utmost care and best standards of safety. And the vehicle was moved to the launch pad also through a newly built track. Every activities were smooth and safe, and we could achieve the mission in a wonderful manner. I take this opportunity to thank all the industrial partners of ISRO who are supplying the products. The uninterrupted supply of hardware and resources are key players to have the mission in the required scheduled times, and I thank all the industrial partners across India who are partners to this success. I thank all the mission executives who have actively contributed towards this mission, and my best wishes to the OneWeb team for the continued successful operations of the satellite on board. And my thanks are due to the entire LVM3 core project team for the untiring efforts of 72 days of launch campaigns. This time, the record time we could complete the launch campaign in 72 days. The team LVM3, which was trained and brought up by none other than our beloved chairman. I take this opportunity to thank Chairman on behalf of the entire project for being with us as a beloved patron. And sir, with your timely guidance and learned opinions, made our decision-making process very fast, which enabled us to complete the mission in the record time of 72 days. The key success is the robust review mechanism existing in ISRO. We have undergone all the reviews, the DRT forums, which are the primary agency to clear all the subsystems went into the mission, and FRR followed by MRR and Launch Authorization Board. I take this opportunity to thank all the chairmen and members of all review forums for the mentoring and guidance. And finally, I thank God Almighty for all the blessings in the form of the glorious success, which was the purpose of the 72 days of penance of all of us, called the launch campaign. Thank you. Jai Hind. Thank you once again, Radhakrishnan and Mohanakumar, for that feedback. And let me take this opportunity to thank once again the entire ISRO community for their work towards making this rocket one of the best in this class. And we are getting ready for the next launch campaign soon with the launch of the GSLV-3. But before that, we are also getting ready for the launch of the PSLV, which is currently going on. In April, we will have the launch of, again, a commercial launch of PSLV. And we are also commencing the campaign for the GSLV-2 as well. So SDSC-SHAR is going to be buzzed with a lot of work for the subsequent launch missions, which will be duly announced. At this time, let me take this opportunity to thank our Honorable Prime Minister, as well as the government, for supporting us in making this launch vehicle, making available for commercial launches.
because it was at a very short notice. Such an opportunity came to us, and we have to get ready with our required approvals and processes which were very necessary. And let me thank the approvals that are given to us for enabling this mission to take place. And it actually increased the confidence on us on this rocket, GSLV Mark III, for taking up the Gaganyaan, which is going to be flying on this rocket as well. So let me give you an additional information. This rocket is also having the S200 motors, which are designed with an increased margins and features which are suited for the Gaganyaan configuration. So we are happy that it performed very well in this mission. There were many more improvements in this rocket which are aimed towards making it human-rated in the other stages and systems as well. So I'm very happy to see the progress incrementally happening, moving towards the Gaganyaan mission as well. So at this moment, let us retire, and then we'll wait for the remaining news about the success of the separation of the remaining 16 satellites, and that will be informed to you through media, as well as social media, as well as our channels. So thank you then. Till then, goodbye from SDSC-SHAR Sriharikota. Thank you.